Assalamu alaikum ji. We were into the 24th lecture the last time related to history and systems of psychology, and we are now into the 25th lecture related to history and systems of psychology. इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं हस्बे मामूल आपको कुछ बंद नसीहत और कुछ हिदायत दे दूं। नसीहत तो ये है कि अगर आप पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो आपको आगे चलने में आसानी रहेगी। जो पिछली बातें हैं वो आपको लिंक और उनका कनेक्शन दिखाई दे जाएगा, और इस तरह से पिछली और मौजूदा बात में आपको ताल्लुक़ जब दिखाई देगा तो आपको समझ भी अच्छी तरह से आने लगेगी, और आपको सारा एक क्लियर पैटर्न जो साइकोलॉजी की डेवलपमेंट का है वो भी दिखाई देने लगेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश यही है कि रिवाइज करते रहिएगा। हमने ये भी देखा है, सजेशन या हिदायत आपको जो दूसरी देनी है, पहली नसीहत थी और दूसरी हिदायत ये देनी है कि हमसे मेरी मुराद माहिरीन नफ्सियात ने ये देखा है कि रिवीजन का हमारी मेमोरी पे, हमारे हाफजे पे बहुत ही अहम असर पड़ता है। सच दैट द मोर द रिवीजन द बेटर द मेमोरी। If you want these things to become a part of your long-term memory, कि ऐसा ना हो कि आज आप याद करें और कल आपके ज़हन से ये बातें निकल जाएं जो हम सीख रहे हैं। अगर आप इसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना चाहते हैं तो इसको रिवाइज करते रहिए। रिवीजन हेल्प्स मटेरियल टू गो इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड बिकम ए पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। इसलिए आपसे गुजारिश और हिदायत यही है आपके लिए कि रिवाइज करते रहिएगा। और एक ही दफ़ा में रिवीजन भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए साथ साथ रिवाइज करते जाइए। चलिए अब आगे चलते हैं, और इससे पहले कि आगे चलें हम हस्बे मामूल देखते हैं कि हमने पिछली दफ़े क्या अपने लेक्चर में पढ़ा था। पिछली दफ़े हमने दो माहिरीन नफ्सियात का आपसे जिक्र किया था। दोनों यूरोप के थे और दोनों माइग्रेट करके अमेरिका गए थे। एक का ताल्लुक कौन से स्कूल से था, याद कीजिए। जी हाँ, सही है, गेस्टाल्ट स्कूल से। और दूसरे का ताल्लुक किस स्कूल से था, या दूसरे के सिस्टम को हमने क्या नाम दिया है अब, हॉर्मिक या डायनामिक साइकोलॉजी। चलिए पहले गेस्टाल्ट स्कूल से मुतल्लिक जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। हिज नेम वाज, एज यू रिमेंबर, कर्ट लेविन, एंड देयर वर टू मोर इम्पॉर्टेंट contributions of his that we talked about and that we need to revise today. One related to his field theory, and as a result of a person's exposure in the field and as a result of negative and positive attractions that he encounters in the field, he is impacted, he is faced with three kinds of conflict, he said. याद कीजिए वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो कौन कौन सी किस्म के थे।
Number one, approach conflict, where Kurt Lewin had said that a person may be faced with two positive goals where he has to select one goal, and in order for him to select one goal, he has to forego the fulfillment of the other goal, and that results in frustration. And that is his first kind of conflict that Kurt Lewin points out. The other kind of conflict that Kurt Lewin pointed out was the approach-avoidance conflict, where a person is faced with two goals. One he wants to approach, and the other he wants to avoid. But in order to approach the attractive goal, the approachable goal, he has to go through the goal that he wants to avoid. There is no way to approach the positive goal without first encountering the negative goal. And that is what leads to frustration. He has to satisfy himself by being attracted to or approach one goal, but in the process he has to go through the dissatisfaction, the disgust, or the negative impact of encountering the negative goal. And that is what Kurt Lewin calls the second kind of conflict, approach-avoidance conflict. And the third kind of conflict that Kurt Lewin talked about was the avoidance conflict, where a person wants to avoid two goals. Two things are avoidable. He wants to avoid both of them, but in order to avoid either, he has to encounter one. दोनों चीजें उसके लिए जो हैं वो मनफी कैफियत रखती हैं, लेकिन उस मनफी कैफियत को मनफी हैसियत से बचने के लिए, एक की मनफी हैसियत से बचने के लिए उसको दूसरे की मनफी हैसियत जो है उसको अपनाना ही पड़ता है. And that is what leads to conflict, and that is what leads to frustration. That was his way of explaining the field theory in terms of three types of conflicts. Kurt Lewin also talked about group dynamics, particularly, if you remember, the theory of leadership phenomena or styles of leaders. And he again talks about three styles or three kinds of leaders. One, what he calls the authoritarian leader, who imposes, who does not invite views, who imposes his views. That is the authoritarian leader. The other, that he called the democratic leader, a leader that invites consensus, whose decisions are based upon consensus input from other people. And the third, that he calls the laissez-faire, where the qualities of both may be mixed, or where leadership is at a lower ebb, where the group dominates, the individuals in the group pull the group towards their own goals or towards a goal that has been presented to the group. And that is the laissez-faire leader, or the leadership where leader imposes less and less, invites less and less, and leads to a minimum. And that is the third kind of leadership that Kurt Lewin talked about. So this is the two important things that we talked about related to Kurt Lewin, who was the other contributor in the Gestalt school. We also talked about William McDougall, the other European, who was at Oxford and then later on shifted to the United States, and his psychology is known as hormic psychology or dynamic psychology. If you remember, McDougall said all human beings and animals have this urge to live, hormy. And the urge to live expresses itself
in instincts, which he later called propensities. These are the propellants, the inner drives that propel human beings and animals to behave. He gave us a list of 18 of those propensities that belong in the harmony or the urge to live. And these 18 are the expressions of the harmony or the urge to live in McDougall's point of view. Before we go forward, I want to bring to your attention once all over again the great impact that the Gestalt school had on modern psychology. मैंने आपसे जब हम जिक्र कर रहे थे पैवलोव की कंडीशनिंग का, तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि पैवलोव की बड़ाई का एक वजह, पैवलोव की बड़ाई की एक वजह यह भी है कि पैवलोव की थियरीज और उसके रिजल्ट्स जो एक्सपेरिमेंट से आए थे, उन थियरीज और उन रिजल्ट्स ने मॉडर्न साइकोलॉजी पे बहुत ही गहरा असर छोड़ा है. और इसका हमने पैवलोव की जो कंडीशनिंग की थियरीज और रिजल्ट्स हैं, उसका मैंने इम्पैक्ट का जिक्र भी किया था. अभी थोड़ा सा जिक्र मैं करना चाहूंगा गेस्टाल्ट स्कूल का क्या इम्पैक्ट हुआ है मॉडर्न साइकोलॉजी पर. मैं 2-3 बातें आपके गोश गुजार करना चाहूंगा इस रेफरेंस में. नंबर 1, जो मैक्स वर्टहाइमर ने कहा था और जो उसने डिस्कवर किया था, द स्टेजेस और द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग और व्हाट ही कॉल्ड क्रिएटिव थिंकिंग. इसका हमने जब हम जिक्र कर रहे थे मैक्स वर्टहाइमर का, तो हमने आपको डिटेल से बताया था. प्रोडक्टिव थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग जो है, वो मॉडर्न साइकोलॉजी का एक अहम तरीन सब्जेक्ट है. इस पे बेतहाशा रिसर्च हो रही है, बहुत काम हो रहा है. और मैंने आपको बताया था कि मिहाली, Csikszentmihalyi, who is a teacher at Chicago University, and Edward de Bono, who had been trained and educated at Cambridge University in England, were deeply involved and are deeply involved in discovering what is creative thinking or problem solving thinking and training people into becoming more and more endowed with, more and more in possession of creative and problem solving thinking. खास तौर पे एडवर्ड डिबोनो जो है, मैंने जिक्र किया था, वो दुनिया भर में वर्कशॉप्स करते हैं and he trains people to become more productive thinker. He uses the term lateral thinking. You remember that too? और ये भी याद होगा आपको कि मैंने आपसे कहा था कि वो पाकिस्तान भी आए थे और जहां भी उन्होंने वर्कशॉप्स दी थी, और मुमकिन है आप कभी वो वर्कशॉप्स टीवी पर भी देखें, ऐसा ऐन मुमकिन है. तो एक तो ये इम्पैक्ट है जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वालों का, मैं समझता हूं खास तौर पे मैक्स वर्टहाइमर का जो कॉन्सेप्ट और जो उन्होंने शुरू किया था टू डिस्कवर what is productive and problem solving thinking, that has stirred the imagination, that has jogged the imagination of a number of psychologists in the North American continent and at the European continent, and indeed across the 5 continents, the 6 continents in the globe. एक तो ये असर है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का. दूसरा असर जो है मैं समझता हूं वो ये है जिसका जिक्र हमने पिछली दफा भी किया, and that was the field of experience. You remember that Gestalt people had talked about
the difference between geographical field and the field of experience. And they had said that human beings react to field of experience rather than the geographical field. यानी वो अपने तखय्युल में जो उनकी फील्ड है, जो उनके ख्याल में जो दुरुस्त है, वो उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हैं, ना कि उसके मुताबिक जो कि एक्चुअल रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है. और मैंने पिछली दफे आपको एक इसकी मिसाल भी दी थी, खास तौर पे ज़हनी अमराज से मुतल्लिक, कि हमारे सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स जो हैं, those are particularly near the theory of the field experience. Somebody who suffers from somatoform disorders, who feels that he is sick or unwell, is actually sick and unwell, whereas in reality there is nothing wrong with him, medically or physically. He is paralytic, he cannot move his arm, he is blind, he cannot see, he is deaf, he cannot hear. Even when medically there is nothing wrong with him, his ears are perfect, his eyes are perfect, his limbs are in perfect order, his muscles are in perfect order, but he is unable to see, he is unable to hear, and he is unable to move his limbs because he is reacting to the field of experience rather than the actual field. And that is what the Gestalt school contributors had pointed out. Another instance in this case is that of the paranoid, another extreme form of mental disease. Paranoia is an extreme form wherein a person feels, somebody who suffers from paranoia feels that people are against him, that people are plotting against him, that people are out to harm him, that people are out to damage him, that people are out to injure him, that people are out to kill him. When in actual fact, that is not true. There is no evidence for what he believes, but he is reacting to his experiential field. For him, his experiential field is most important. And as a result of that, he is suffering. उसको जाहिर है जो ये शख्स महसूस कर रहा है कि लोग उसके खिलाफ कोई स्कीम बना रहे हैं और उसके खिलाफ हैं, और उन लोगों में उसके नियर और डियर वंस, उसके प्यारे मोहब्बत करने वाले भी शामिल होते हैं अक्सर औकात. माँ, बाप, बहन, भाई, बीवी, खामिन, बच्चा, ये सब भी उसके इन शकूक में शामिल हो सकते हैं. This is an example of a paranoid's reaction to a field of experience rather than the geographical real field. And that goes to the credit of Gestalt school contributors, that they pointed out that people react to the field of experience. And the third thing I want to point out in this regard is their concept of dynamic psychology or group dynamics that Kurt Lewin had pointed out. Kurt Lewin had said that people in a group, when they are in the form of a group, a new psychology prevails and emerges in the group. And if you remember, we talked about Hawthorne studies, where psychologists wanted to see how can people be made more productive in industries. And one of the factors that they discovered was that if you put people amongst other people whom they like, where a person in a group likes other people,
where people in a group like each other, the productivity of that group as a whole increases. And that is what group dynamics is. The influence of intangible factors on the group. And that is what the Gestalt school had pointed out. And that is an important contribution of the Gestalt school. That is a part of the modern psychology today. तो जैसे मैंने गुजारिश की थी कि पेवलोव और पेवलोव के कोवर्कर्स ने मॉडर्न साइकोलॉजी पे बहुत गहरा असर छोड़ा है, इसी तरह से गेस्टाल्ट स्कूल वालों ने भी मॉडर्न साइकोलॉजी पे बहुत अहम असर छोड़ा है. अब तक उनके पॉइंट आउट की हुई फील्ड्स में, उनके एरियाज में बेतहाशा रिसर्च हो रही है और अक्सर नई नई बातें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं. चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड लेट अस रिव्यू व्हाट इज टेकिंग प्लेस इन व्हाट वाज रशिया and what had become Soviet Union. I hope you remember the difference between Russia and Soviet Union. We talked about that difference at least twice in previous lectures, but just to refresh your memory again, let me briefly introduce and point out that difference to you the third time. In 1917 में जो मौजूदा रूस मुल्क है और जो उस वक्त भी रूस था, जहां बादशाहों की हुकूमत थी और जो बादशाह थे वो जार कहलाते थे, वहां पर 1917 में एक बगावत हुई एंड ए पॉलिटिकल पार्टी बाय द नेम ऑफ बोल्शेविक पार्टी ओवरथ्रू द मॉनार्की. बादशाहत खत्म की गई और बोल्शेविक पार्टी की हुकूमत कायम हुई. बोल्शेविक पार्टी अडॉप्टेड द methodology of Sovietization, and that is why Russia called itself after 1917 as the Soviet Federation of Russia, and then many other regions along the old Russia and from within those areas joined those Soviets and formed into a big country called the USSR, Union of Soviet Socialist Republics. That was due to the revolution which now we call the Soviet Revolution that took place in 1917. उससे पहले जो माहिरीन नफ्सियात थे वो रशियन साइकोलॉजिस्ट्स कहलाते थे या रशियन फिजियोलॉजिस्ट कहलाते थे. उस तारीख के बाद जो साइकोलॉजिस्ट या फिजियोलॉजिस्ट्स आए हैं वो सोवियत साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं. और अब हम जो मुताला करने लगे हैं वो उन्हीं लोगों का करेंगे जिनको अब हम सोवियत साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं. तो इसलिए रशियन साइकोलॉजिस्ट्स में और सोवियत साइकोलॉजिस्ट्स में फर्क ना भूलिएगा. और आपको यह भी याद होगा कि in 1991 and later, Soviet Union was dismantled and the regions and countries that had become part of the Soviet Union became independent countries. So now Russia is called Russia, which was previously called part of the Soviet Union. So don't get confused about these things. These are historical facts. Let's go forward and let's take a look at some of the
Soviet psychologists. The Soviet psychologists are called, as you can see on your screen and behind me, they are called historico-evolutionary psychologists. Their point of view is called historico-evolutionary psychology. और उसकी भी वजह हम आपको बताते हैं. Because they looked into the historical evolution, development of consciousness, historical evolutionary development of how organisms developed and what changes took place in the organisms during this historical developmental stages, during these historical developmental stages. क्योंकि ये लोग एक तारीख में सिलसिला देखते हैं डेवलपमेंट का, इसीलिए मॉडर्न हिस्टोरियंस इनको हिस्टोरिको एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं. हम इनमें 4 लोगों का जिक्र करेंगे. आज सिर्फ 2 अहम नामों का और उनकी कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं. सो लेट अस गो फॉरवर्ड एंड लुक एट व्हाट आर दीज पीपल एंड व्हाट आर देयर कंट्रीब्यूशंस. पहली बात जो वो देखनी है आपने वो ये है that we are talking about the times of the early first 2 or first 3 decades of the 20th century. हम 1917 से लेके 1910 से लेके तकरीबन 1930-35 के दौरान का जिक्र कर रहे हैं. इस वक्त आप जरा जहन में लाइए कि यूरोपियन या अमेरिकन सीन्स पे क्या प्रेवलेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू थे साइकोलॉजी में. जरा याद कीजिए, गेस्टाल्ट तो 1940 और तीसरी दिहाई 1930-35 की बात है. वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट, द सेकेंड एंड द थर्ड decades of the 20th century. उस वक्त प्रेवलेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू जो थे वो 2 थे. कौन कौन से? पहला करंट उस वक्त का पॉइंट ऑफ व्यू था फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. साइकोलॉजी वॉज डिफाइंड एज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बाय विलियम जेम्स and by other functionalists in Europe, and they were trying to look at what is the role of consciousness in adjusting human beings to their environment. And the other point of view current at that time was the American point of view, the behaviorist point of view. The behaviorist point of view was that we should ignore consciousness, that we should look at behavior, that we should be not concerned about introspection, but we should be concerned about what is directly observable. So keep in mind that there were 2 current viewpoints in the opening years of the 20th century which impacted the world of psychology at that time. The functionalist and the behaviorist point of view. You remember, you can see that the functionalist point of view expresses itself in the Gestalt point of view. The Gestalt people see how perception functions, how consciousness functions, how we see patterns, how we react to the physical, not the geographical, but the experiential field. So they are looking at these different functions. And then there was the behaviorist point of view, which said, we don't need to look at these introspective, functionalist things. We should see only what is directly observable. Those are the 2 current existing points of view at that time. The historico-evolutionary psychology put forward the view
that they wanted to see how consciousness develops during, or how consciousness developed during different stages of human growth and human development. They also put across the view that human beings cannot be seen in two different compartments, that we cannot study psychology as science of consciousness or as science of behavior. Human beings are a unity. Consciousness and behavior are mixed together. So we should look at the development of mental functions, because those mental functions impact behavior. We should see the behavior and its relationship with mental functions, and then we should see how these behaviors and mental functions developed over different epochs or different times in man's development. And that is what is called the historico-evolutionary psychology. That is the approach of the Soviet psychologists, treating human beings as a unity, looking at the functions of consciousness, looking at the development of consciousness, looking at the relationship between consciousness and behavior, and looking at the different stages of development of consciousness. The first Soviet psychologist that we need to look at is Leon Vygotsky. आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, और आपको you can see it on the screen behind me. Leon Vygotsky was born in 1896 and he died in 1934. Leon Vygotsky was impressed by two people in his development of psychological thought. You can see the impact of two great Russian physiologists, psychologists on Vygotsky's thinking. One is Pavlov. If you remember, Pavlov had shown how organisms learn. Pavlov had shown that organisms learn by certain principles of conditioning. That those principles of conditioning are, tell me what they are. 1, reinforcement. 2, spontaneous. 2, generalization. 3, discrimination. 4, extinction. 5, spontaneous recovery. Remember all of them? Well, that is how organisms learn. Vygotsky could see that Pavlov was right. He saw that is how human beings learn. And then Vygotsky had also read Sechenov. And what had Sechenov shown? Sechenov had shown that human behavior, or in fact behavior of birds and animals and human beings, is a function of the physiological changes that take place in their body. Those physiological changes are expressed in behavior, and behavior can be measured in performance. Or behavior can be expressed or can be seen in various psychological functions in human beings, and the behavior can be observed in animals. That behavior, in short, is nothing but an expression of the physiological, the biological that is taking place within a person, within an organism. Vygotsky wanted to see how higher functions develop, and he came to the conclusion that higher functions, the mental functions, thinking, developed when man started to live together in historical development. इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगी ये बात.
In the initial stages, when society had not developed, man was living alone. He would eat from the environment, दरख्तों का फल खा लिया, पत्ते खा लिए, जड़ें खा ली. By the way, हम अब भी यही खाते हैं. We eat roots. Do you eat roots? Oh, yes, you do. Carrot, gajar is a root. Aloo is a root. Shaljam is a root. These are all roots. And we eat them. हम पत्ते भी खाते हैं. Do you eat saag? There you are. इसके अलावा हम फूल भी खाते हैं. कचनार खाते हैं आप? It's a flower. इसके अलावा हम फल भी खाते हैं. Obviously. So that is what man was eating. Except our eating habits have slightly changed. We cook them, we boil them. But initially when man was not living in societies, then he was existing on these things. But when human beings multiplied and they started living in groups, then collectively they had to live together, work together. In order to live and work together, they had to develop language. And that is how the Soviets, and particularly Vygotsky, thought language developed. The need for communication had arisen. ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए language बनी और हमारी consciousness का हिस्सा बनी. इसी तरह से higher order thinking बनी, mathematical symbols बने, science बने और हमने एक दूसरे से communicate करना सीखा. एक दूसरे को अपने आइडियाज के बारे में बताना सीखा, एक दूसरे से आइडियाज लेने सीखे. इसी तरह से हमने मैथमेटिकल सिंबल्स और लैंग्वेज जब इस्तेमाल की तो हमारी कॉन्शियसनेस में जानवरों की कॉन्शियसनेस से अलहदा एक बुनियादी फर्क आ गया. और वो फर्क क्या है? यूजेज ऑफ लैंग्वेज एंड यूजेज ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स. And that is how Vygotsky teaches us that behavior, that consciousness developed as a function of man started to live together in collectives, in social groups. ये हमारी modern consciousness जिसको हम कह रहे हैं, development of language जिसको हम कह रहे हैं, ये उसकी शुरुआत है. ये इस तरह से वाइगॉट्स्की का ख्याल था कि ऐसा हुआ, ऐसा बना. एक तो वाइगॉट्स्की की ये कंट्रीब्यूशन है कि हम कॉन्शियसनेस को अलहदा नहीं कर सकते इंसान की एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट से. कॉन्शियसनेस एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है. अगर आपको कॉन्शियसनेस के बारे में जानना है तो आपको एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट पे देखना चाहिए. ये देखें कितनी अहम बात वाइगॉट्स्की ने की है कि इंसानों को समझने के लिए उनकी तारीख को जरूर मद्देनजर रखना पड़ेगा, वरना हम इंसान को समझ नहीं पाएंगे. चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा अहम माहिर नफ्सियात जो सोवियत माहिर नफ्सियात है वो कौन है. एंड दैट इज सर्गेई रूबिनस्टाइन. जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ही वॉज बॉर्न इन 1889 एंड ही डाइड इन 1960. ही इज कंसिडर्ड an important, a prominent historico-evolutionary psychologist in Soviet era. और याद रखिए सोवियत era जो है, that is not the Russian era, that is the Soviet era after 1917 revolution. Let us take a look at some of the contributions of Rubinstein.
Number one, Rubinstein criticized those people who try to understand behavior and human psychology in terms of simple stimulus and response. उसका ये कहना था कि बिहेवियर या साइकोलॉजी चाहे वो इंसानों की हो या जानवरों की हो, आप सीधी सीधी स्टिमुलस रिस्पॉन्स में नहीं समझ सकते. ये कह देना कि एक स्टिमुलस मिला और उस पे एक रिस्पॉन्स हुई, ये बात बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करती है. वो कौन सी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एनालिसिस इग्नोर करती है? That is what Rubinstein said. Stimulus response, the mechanistic view, ignores the internal conditions, the role of the internal conditions, the thoughts, the feelings, the emotions, the ideas, the fears, the imagination, the part that memory, the part that past experience plays, the part that is played by what has happened to a person in his immediate previous life, and indeed in the development of human beings. If we try and understand psychology only in terms of stimulus and response, then we would not be able to understand psychology in a complete manner. Therefore, Rubinstein said that those psychologists who try and understand humans in terms of stimulus and response treat humans as machines, which is defective. Human beings are not machines. What do you think? भाई, human beings तो machine हैं. भूख लगती है, आप खाते हैं. आपको मार पड़ती है बच्चों को, तो वो चलना फिरना या बुरी बातें करना बंद करते हैं. अगर उनको बताया जाता है कि ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, तो वो सीख लेते हैं. तो ये सीधा सीधा सा स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स तो है. इसमें कौन सी इंटरनल कंडीशंस इन्वॉल्व हैं? देखिए, ऐसा नहीं है. दो बच्चों को एक ही स्टिमुलस मिलता है. मेरी एक ही आवाज आप सब लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन जैद और बकर मुख्तलिफ तरह से उसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं. अलिफ और बे और जीम उस पे मुख्तलिफ रिएक्शंस दे रहे हैं. इन चीजों का, इन स्टिमुलाई का जैद, बकर, अलिफ, बे, जीम पर मुख्तलिफ असर पड़ रहा है. क्यों? स्टिमुलस तो एक ही है, लेकिन इसलिए क्योंकि जैद, बकर, अलिफ, बे, जीम की इंटरनल कंडीशंस, जो रूबिनस्टाइन ने कहा है, एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मुख्तलिफ हैं. और अगर हम उन चीजों को इग्नोर करेंगे तो फिर हम ह्यूमन बीइंग्स को समझ नहीं पाएंगे. अगर आप ह्यूमन बीइंग्स की डेवलपमेंट देखें तो ऐसी ही बात है. एक मिसाल देख लीजिए कि जब आज से कई सदियां पहले, समझ लीजिए 10 सदियां या 15 सदियां पहले, जब बिजली चमकती थी, आंधी तूफान बादो बारा होता था, तो इंसान डर जाता था. अब बिजली चमकने से और बादो बारा से इंसान नहीं डरता, क्योंकि अब इंसान ने देख लिया है कि बिजली और बारिश और तूफान किन वजूहात की बिना पे होता है, और इसीलिए उसकी इस नॉलेज की वजह से उसका डर जो है वो बदल गया है. उसकी इंटरनल कंडीशंस की वजह से उसका रिस्पॉन्स टू द लाइटनिंग हैज चेंज्ड. द रिस्पॉन्स टू लाइटनिंग स्ट्राइकिंग many years ago was different
to man's response of lightning now. That is because in these historical years, in these years in which he developed, certain changes have taken place in him, and those changes impact him, and those changes are part of his psychological makeup now. So if we ignore those internal conditions, we are in no position to judge and to understand human beings. आज से कुछ अर्सा पहले एक और मिसाल दे के इसकी एक्सप्लेनेशन आपके लिए आसान करता हूं. You are familiar, maybe you are not, with the concept of EQ. EQ stands for emotional quotient. जैसे IQ है हमारा, इसी तरह से एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है EQ. IQ से हमारी जहानत की पैमाइश की जाती है. एक नॉर्मल शख्स की IQ 100 होती है. एक जिस शख्स की जहानत उससे नॉर्मल लोगों से, एवरेज लोगों से कम है, उसकी जहानत 100 से कम है. और एक शख्स की जहानत अगर 112, 150, 100 है, 170 है, तो उसकी नॉर्मल लोगों से, औसत लोगों से जहानत ज्यादा है. अब ये पैमाना जो है, ये IQ कहलाता है, हमारी जहानत का पैमाना. ये डिस्कवर किया था, या इसका कॉन्सेप्ट दिया था 20वीं सदी के शुरू में एक फ्रांसीसी माहिर नफ्सियात एल्फ्रेड बिने ने. उसका भी जिक्र करेंगे हम. मैं आपकी तवज्जो आगे ले जाना चाहता हूं इससे. द कॉन्सेप्ट ऑफ EQ, इमोशनल कोशेंट. अब हमने पिछले 2, 3, 4 दिहाइयों में ये भी देखा कि कुछ लोग EQ में हाई हैं और कुछ लोग EQ में कम हैं. Now what is EQ? EQ is your emotional quotient, your ability, a person's ability to read emotions of people around him and to read his or her own emotions and then adjust to these emotions around and his own emotions. If someone has a higher capacity of reading other people's emotions and his own emotions and adjusting, then that person has higher EQ as compared to somebody who has the inability to read other people's emotions and the inability to read his or her own emotions. That person has low EQ. EQ has evolved over the last 4-5 decades, and that is an addition to man's consciousness. That is an internal condition that impacts his behavior, that impacts behavior of people around him, that impacts his own psychology, that impacts the psychology of people around him. And that is what Rubinstein is saying, that if we ignore internal conditions, and I gave you the example of an internal condition being the EQ, then we are unable to understand human beings, and we would not be able to take a look at psychology in its entirety. The historical or historico-evolutionary psychology, or what we call this Soviet psychology, tried to look at how consciousness developed and what is the role of internal conditions in this consciousness. Before we end today's lecture, let us take a look at two of the important contributors in the historico-evolutionary psychology or the Soviet psychology. The first person in that context that we talked about, Leon
Vygotsky showed that man's development, particularly development of consciousness, is a function of man's biological and cultural evolution, development. The other person that we talked about was Sergei Rubinstein. And Rubinstein had shown that internal conditions influence man's psychology and his behavior. Both of them had shown that environment affects man and that in turn man affects the environment. Both of them had shown that man and the outside world are in a dialectical process. One affects the other, and the other in turn affects the first. And that is the crux of the historico-evolutionary psychology. We will talk about some other Soviet psychologists. Until next time, Khuda Hafiz, God be with you.